Hello. Am I audible? Yes, sir. और साथ के साथ लाइव भी है। ओके, आप में से कोई जिसको हिंदी समझ में नहीं आती हो? Sir, I'm not fluent with Hindi. You are not fluent in Hindi, but you understand Hindi? Yeah, I do understand basic. If you understand, then I will teach in Hindi, and if you Yeah, have any sure. doubt, you can ask me in English. Okay, sir. Okay, so Yogeshwaran is also here. So let's continue in English. So, okay, our first question is: a bag contains 600 coins of 25 denomination. 600 coins of 25 paisa denomination. 1200 coins of 50 paisa denomination. If 12% of 25 paisa coin and 24% of 50 paisa coin are removed, the percentage of money removed from the bag is nearly. Okay, so what we are doing in this question, we are removing 12% from this 600 coins and 24% from this 1200 coins. Okay, so after removing this 12% from 600, what will be our new coins? That is, okay, 60 plus 12% enough. 100 into 12 by 100, that will be equals to 72. Sorry, 600 into 25 नहीं, उसमें बोल रखा है 12% 600 वाले हम निकाल रहे हैं. ओके, वो साइड में रख दे रहे हैं, उनको निकाल के फिर बाद में देख रहे हैं. ठीक है. So here, after removing 72 coins from 600, we have left coins 518. Okay. And or we can say 72 removed from this, and we are removing 24% from this 1200 also. That will be equals to, okay, multiply करके बताओ मुझे क्या होता है 12 into 24. 288. So we are removing 288 coins from this row. Okay. Now we have to find the percentage of money removed from the bag is nearly. कितना percentage of money हम निकाल रहे हैं. ठीक है. So on starting we have 600 coins of 25 paisa, which make total sum of 600 into 25. That will be equals to कितना 25. We have 600 coins of, okay, 1500 paisa. Okay, 1500 paisa. And the second one, we have 1200 coins of 50 paisa. That will be equals to, we have 1200 coins of 50 paisa. That will be equals to how much paisa? 6000. So now we have total of 7500 paisa, and we were removing the amount 72 into 25 plus next 288 into 50. This is the amount we were removing from our whole bunch. Now we have to find the amount we are removing is what percent the total amount. So here, sorry, 72 कहाँ से है? तो हमने फर्स्ट क्या किया, 600 में से 12% निकाल दिया ना, तो 72 वहाँ से है. Okay, so we have to find the percentage of 72 into 25 plus 28 into 50 by 7500 into 100. Okay. Okay, solve this and you can find the answer. Okay, so the next question is three friend P, Q, and R donates. P, Q, and R donates 8%, 7%, and 9% of their salary to a charitable hospital in the given order. Salary of P and Q is same, so the salary of P and Q is same.
and we have given, and the difference between their donation is rupees 74. And the difference between donation is 74. If you find the difference between the percentage of donation of P and Q, that would be equal to 1%. So the value of 1% is equals to 74 rupees. Now we have to find the salary of P and Q, that would be equals to so the salary of P is 7400 and the salary of Q is also 7400. Okay. Now we have given the total donation by P and Q is 7400. कैसे आया? Okay. Here the difference between the donation of P and Q, that would be equals to 1, and the value of 1 is given in the rupees of 74. If 1% is equals to 74, then 100% would be equals to 74 into 100, that is 7400. Okay. Now further, the total denomination of P and Q is rupees 525 more than that of R. So the donation of P and Q is together is 525 more than R. Okay, what is the percentage of total salary of the three donation? So here first we have to find the donation of R also. Here the donation made by P is equals to 8% of 7400, and the donation made by Q, that is equals to 7% of, or we can just find the 15% of 7400. 15% of 7400. Okay, that would be the donation made by P and Q together. Okay, and the next, the difference between the donation of P and Q and R is 525. Okay. Okay. So 7400, 15% of 7400 would be equals to 15 into 74, 11110. Okay, so the donation made by P and Q is 1110. So the donation made by R is 1110 minus 525, that would be equals to 575. 25 subtract, oh sorry, 585. 585. So 585 is the donation made by R only. Okay. So this 9% value is equals to 585. We have to find the value of 100%, that would be equals to 585 into 100 divided by 9. Okay, that is equals to okay, this is 6500. So the total salary of R is 6500. Now we have to find the donation, the total donation made by all three is what percent of their salary. Okay, so the total salary of P, Q and R is 7400 into 2 plus 6500, 21300. So this is the total salary of P, Q and R. The total donation made by all three, that would be equals to donation number 1110 plus 525, that would be equals to 585. Sorry, 596. So 1695 is what percent of 21300. Solve this, you can find the answer. 7 point. Okay, so the answer of this question is 7.93. So next question is, Aman gave 40% of the amount he had to Rohan. Rohan in turn gave 1/4 of what he received from Aman to Sahil. After paying 200 rupees to the taxi driver out of the amount he got from Rohan, Sahil now has 600 left with him. How much amount did Aman have? So here the question is, Aman gave 40% of amount. Let's say Aman have X rupees, and Aman gave 40% of amount to Rohan.
So here Rohan have 40% of X. Rohan in turn give 1/4 of what he received from Aman to Sahil. So Rohan, let's say if I take this X equals to 100, let's say I'm starting Aman 100 rupees. So Aman gave 40 rupees to Rohan, and then Rohan gave 1/4 of this 40, that would be equals to 4 rupees. 1/4, that would be 10 rupees to Sahil, है ना? To Sahil. And again his question says that after paying rupees 200 to, so now Sahil paying 200 to taxi driver. Now he have left amount that would be equals to 600. So here the total amount Sahil received from Rohan, that would be equals to 200 plus 600. Hai na? That is total 800 rupees Sahil received from Rohan. And if we take this 100 rupees as our initial amount of Aman, then this 10 rupees, then this 10 unit would be equals to this 800 rupees. Now we have to find the how much amount did Aman have. We have to find the value of this 100 unit. If 10 unit is equals to 800, then 100 unit would be equals to 8,000 rupees. So Aman would have 8,000. So the next question is, in an examination, 5% of the applicants were found ineligible and 85% of the eligible candidate belong to the general category. Okay. So here, if there is a total 100% candidate, 5% of the applicants were found ineligible. So the ineligible candidate would be 5 and the eligible candidate would be 95%. Okay, 95. Further divided. Okay, and again 85% of the eligible candidate belongs to the general category. So 85% of 95 would be belongs to general category, and the rest would be belongs to other category. If 4275 eligible candidate belongs to other category, so here 4275 is the other category students, then how many candidates applied for the examination? So we in this question we have to find the value of this 100%. But to find this 100%, first we have to divide 95 into the part of 85% and 15%. So that would be equals to 85% of 95. 85% of 95. Okay, 85% of 95 is equals to 80.75. The rest other candidate would be 19.25. So this 4275 is the value of 19.25%. We have to find the value of 100%. That would be equals to 4275 into 100 divided by 19.25. Okay, solve this, you can get your. Okay guys, any doubt? So I had a doubt in the first question, sir, the coin question. In first question or this question? So this question is clear. Okay, so you have doubt in first question, this question. Yes, sir. Could you just repeat what you did, sir? So this is our first question. In first question, the question is a bag contain total 600 coins of, there is 600 coins of 25 paisa denomination, and there are 1200 coins of 50 paisa denomination. And in through and we were removing 12% from the 600 coins, that is belongs to 25 paisa denomination, and we were removing 25% coins from the 50 paisa denomination, that would be 1200. And we have to find what would be the removed percentage, or what would be the percentage of removed money by the total percentage. Okay,
So first we have to find the total coin we were removing from this 25 paisa denomination, or the total coin we were removing from 50 paisa denomination. So here the 25 paisa coin is total 600 coins. So we were removing 12% of the 600, that would be equals to 600 into 12 by 100, that is equals to 72 coins. So we were removing 72 coins from 25 paisa denomination, and into 24% of this 50 paisa denomination, that would be equals to 1 kitna tha? 12 into 24, 6,000. No, 280. sorry. 280. 288. So 288 coins we were removing from 50 paisa denomination. Okay. So now we have to calculate the total amount we were removing from the whole amount. Okay. So initially we have total amount that would be equals to 600 into 25 plus 1200 into 50. Okay. This amount is in paisa. And the amount we were removing, that would be equals to 72 into 25 plus 288 into 50. This is the amount we were removing from our whole bunch. So now we have to find the percentage of 72 into 25 plus 288 into 50 by 600 into 25 plus 1200 into 50 into 100. This is the percentage decrease in our money. Okay. Yes, sir. Got it, sir. So now we have. So the next question is, a number is decreased by 20% and then increased by 20%. The number so obtained is 16 less than the original number. What was the original number? So in this question, let's say if I take initial number would be 100. So first we were first time decreasing this 100 by 20%. That will be that 100 is reduced to its 80. And now I'm increasing 20% in this 80. That would be equals to 16. So now this number would become 96. So their whole change in this two process, that would be equals to, there's a decrease of 4. There's a decrease of 4 in this process, and we have to find the difference that would be equals to 16. If in 100 we have a difference of 4, to make this difference 16, what would we do? We will multiply this by 4, and again this total sum also to 4. So our initial amount would be 400. Okay, the next question is, in a certain school, 20% of the students are below 8 year of age. The number of students above 8 year of age is 2/3 of the number of students of 8 year age, which is 48. So here the student belongs to 8 year, that would be total 48. Okay. And the number of student above, so the number of student greater than 8 year, that would be 2/3 of this 48, that is equals to 32. Okay. In a certain school, 20% of the students are below 8 year of age, and the student below 8 year of age, that would be equals to 20%. So this value should be equals to 80%. So now here we have total student of 8 year or greater than 8 year age, that would be equals to 48 plus 32, that is 80. So this 80 is equals to our 80%. We have to find the total number of students in school, that would be equals to 100. Okay. So our next question is, Mr. Jennifer had 200 chocolates. She wants to distribute this chocolate to certain number of students in a class. Suddenly, 2 of her elder students come to join. As a result, she has to give 5 chocolate less to each child. How many children are there in the class as present? So we can do this question by just factor distribution method. So initially we have total number of chocolate, that would be 200.
Okay, now we will find the factor of this 200. On one side it will represent the total number of students, and the other side it represent the chocolate received by one student. Okay, now if I make the factors of 200, that would be 1 and 200, 2 and 100, and that will be so on. Now I'm just coming to the answer only. Okay, now one. Okay, so the one factor of 200 is 8, and 2, 5, 25, and the other factor is 10 and 20. So here if you can see that the total number of student is increased by 2, there's a difference between total number of student, that is 2. The difference between chocolate is 5. So these two factors are satisfying our both the condition that would be given in this question. So the question we have to find how many children are there in the class is present. So we have to find the total number of students, starting students. So on starting we have total number of 8 students. After joining 2 students, so the total student would become 10. So the answer of this question is 8. इसमें देखो क्या 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 है. गूगल फॉर्म में 10 बताया था इसका आंसर. क्या सर 10 होगा क्योंकि प्रीवियस नहीं पूछा है, अभी का पूछा है, तो 10 होगा आंसर. प्रेजेंट में पूछा है, स्टार्टिंग में कितना था? नहीं, अभी कितना है आफ्टर 2 ज्वाइनिंग, तो 10 होगा. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास एट प्रेजेंट. ओके, देन उस केस में फिर 10 होगा. एट किया, क्या हुआ, ठीक था वो गलत था? ओके ओके, सॉरी, प्रेजेंट पहले वाला, अर्लियर, राइट नाउ मतलब सॉरी, प्रेजेंट वाला अभी कितने हैं, और अगर ये कुछ हो तो पहले कितने थे, तो 8 आता. ओके हाँ, इसका 10 ही होगा. प्रेजेंट में 10 होंगे न्यू टू स्टूडेंट ज्वाइन करने के बाद. ओके हाँ, नहीं आया. सो ठीक है, क्वेश्चन था 200 चॉकलेट्स को हमें डिवाइड करना था कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में. ठीक है, और वो कंडीशन क्या दे रखी थी, अगर टू न्यू स्टूडेंट आगे ज्वाइन करते हैं उस ग्रुप को, तो जो उनका चॉकलेट का डिफरेंस था, अगर स्टार्टिंग में एक बंदे को चॉकलेट मिल रही थी x, तो उसके बाद कितनी चॉकलेट मिलेगी एक बंदे को जब 2 बच्चे जुड़ जाएंगे, तो x माइनस 5. तो डिफरेंस चॉकलेट में क्या था, 5 का. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 200 के फैक्टर्स देखें. ठीक है, जो भी फैक्टर्स इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, पहली कंडीशन क्या है कि डिफरेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में 2 का और चॉकलेट्स के बीच में 5 का. जो भी इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही अपना आंसर होगा. तो इस केस में मैंने बोला कि हम डायरेक्ट उस पे आ जाते हैं फैक्टर्स पे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे. ठीक है, तो जो आसपास के फैक्टर मुझे दिख रहे थे, वो एक फैक्टर क्या था, 8 वाला. 8 के साथ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आ रही थी 25. उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या था, 10 वाला. 10 के साथ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आ रही थी 20. अगर अब आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखो, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है हमारी एक चॉकलेट जो कि एक बच्चे को मिल रही है. तो स्टार्टिंग में जब 8 बच्चे थे, एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिल रही थी, 25. अब जब 2 बच्चे इंक्रीज हो गए तो एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिल रही है, 20. तो यहाँ पे चॉकलेट में 5 का डिफरेंस आ गया और स्टूडेंट में 2 का डिफरेंस है. तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है. अब हमें बताना है कि इसमें प्रेजेंट में कितने बच्चे हैं टोटल. तो प्रेजेंट वाला मतलब 2 बच्चे जोड़ने के बाद तो टोटल कितने हैं, 10. Okay, the next question is a bag contains 500 coins of 50 paisa denomination. So we have 500 coins of 50 paisa denomination, 1500 coin of 1 rupee denomination, 1500 coin of 1 rupee denomination. If 20% of each denomination of coin are removed, what percentage of the reduction would be there in the total amount? Okay, ये same है जो हमने first question किया था वैसा ही, तो इसको कर लेना आपने. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, fresh fruit contains 68% water and dry fruit contain 20% water. So in fresh fruit we have 68% water and the rest 32% is our let's say क्या होता है वो, ड्राई फ्रूट. फ्रेश फ्रूट, हाँ ड्राई फ्रूट नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं, वो बिल्कुल हटा देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं. ओके, यहाँ पे हम लेते हैं ये एक्स टाइप का फ्रूट मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्राई फ्रूट में क्या होता है, हमारे पास 20% वाटर होता है
and the rest 80% is the substance, that is X. Okay. Here the question is how much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit. So from 100 kg of fresh fruit, we can obtain how much kg of dry fruit. So in 100 kg of fresh fruit, there is 68% water, and the rest is our quantity that in the rest quantity we do not have any water. So this X quantity would be equals to 32 kg. Okay, so the water is 68 kg, the next X quantity is 32 kg. Okay, so the value of this X 32 kg is equals to 6 X in dry fruit also. Okay, so the X is equals to 32 kg, and this 32 kg would represent the total 80% of the whole dry fruit. We have to find the 32% कैसे? देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, टोटल जो फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 100 केजी थी। उस 100 केजी में अब हमें फर्दर पता है कि 68% तो क्या होता है, वाटर होता है, और रेस्ट 32% क्या होता है, अपना कोई भी एक अमाउंट होता है जिसमें बिल्कुल भी पानी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो 32 केजी तो वो अमाउंट हुआ जिसमें पानी प्रेजेंट नहीं है बिल्कुल भी, और 62 केजी हमने वाटर साइड में निकाल दिया। अब ड्राई फ्रूट में भी क्या होता है, 20% तो वाटर होता है, और बाकी का जो 80% बच जाता है वो बिल्कुल अलग से क्वांटिटी होती है जिसमें कोई भी पानी नहीं होता है। तो जो ये 32 क्वांटिटी है वो इस 80% को ही रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 80% इसके इक्वल है 32 केजी के इक्वल है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, 100% की वैल्यू। तो 100% क्या होगा अपना, 32 into 100/80, दिस इज इक्वल्स टू 40 kg. Okay. Okay, so the next question. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सम क्वांटिटी ऑफ घी 60% ऑफ प्योर घी एंड 40% ऑफ वनस्पति घी। अगर मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे पास x kg कोई भी प्योर घी और वनस्पति घी का मिक्सचर है, तो उसमें क्या है, क्या बोल रखा है कि 60% क्या है हमारा, प्योर घी है, रेस्ट जो भी 40% बचा वो क्या है हमारा, वनस्पति घी। अगर मैं यहाँ पे प्योर घी और वनस्पति घी का रेशियो देखूं, तो रेशियो क्या है यहाँ पे, 3:2 है। ठीक है, अब बोल रखा है इफ 10 kg ऑफ प्योर घी, अब हम क्या कर रहे हैं, 10 kg ऑफ प्योर घी ऐड कर रहे हैं, देन द स्ट्रेंथ ऑफ वनस्पति घी बिकम्स 20%। अब ये 10% ऐड करने के बाद वनस्पति घी की परसेंटेज कितनी होगी, 20%, और प्योर घी कितना हो गया, 80% हो गया रेशियो। अब अगर यहाँ पे इनका रेशियो बनाओगे तो रेशियो क्या आएगा, 4:1। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, वनस्पति घी हमारा कांस्टेंट है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जितनी क्वांटिटी वनस्पति घी की थी वो नेक्स्ट में भी सेम ही रहेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ओनली प्योर घी ऐड कर रहे हैं, कुछ इसके अलावा कुछ और ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा वनस्पति घी 2 यूनिट ऑब्टेन कर रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट है वनस्पति घी के पास, तो यहाँ पे भी 2 यूनिट होनी चाहिए उसके पास। तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, तो ये हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 8:2। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, टोटल हमारा चेंज कितने का हुआ है, प्योर घी 3 से 8 पे आ गया है, चेंज कितने का हुआ है, 5 का चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या है, क्या करना है, वो 5 यूनिट डालनी है इनिशियल टोटल यूनिट की। तो इनिशियल में टोटल हमारे पास कितनी यूनिट थी, 5 यूनिट, हमें इस 5 यूनिट की पूरी 5 यूनिट ही डालनी है। ठीक है, जिससे कि हमें हमारा क्या रेशियो कितना बन जाएगा, 8:2 और 4:1 में कन्वर्ट करने के। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि ये 5 यूनिट किसके इक्वल है, 10 kg के इक्वल है। ठीक है, अब देखो हमें स्टार्टिंग वाली टोटल यूनिट निकालनी थी, स्टार्टिंग वाली टोटल यूनिट में भी कितनी है, 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 kg। तो इस x की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, 10 kg। ओके, ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया वो तो बताओ। So I didn't understand the 5 part that needs to be added. I didn't get that. ओके ओके, देखो ये इसमें क्या होता है, जैसे कि जितना भी हमारा चेंज हो रखा होता है ना, जैसे यहाँ पे मैं प्योर घी देखता हूँ, प्योर घी हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था, 3 था, उसके बाद चेंज होके वो प्योर घी कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसमें क्या हुआ है, हमने 5 यूनिट्स का ऐड किया है। तो जो ये हम 5 यूनिट्स ऐड करते हैं ना, वो इनिशियल में जो हमारे पास टोटल रेशियो होता है ना,
उस टोटल रेशियो की उतनी यूनिट ऐड करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता अगर हमारे पास ये रेशियो 7:2 होता, ठीक है, तो हम इसमें कितना ऐड करते हैं टोटल का 5/9 ऐड करते हैं टोटल यूनिट का, टोटल एक्स का 5/9 ऐड करते हैं। ठीक है, बट इस केस में क्या है, हमारे पास जो टोटल यूनिट है स्टार्टिंग की वो कितनी है 5 है, उसमें हम 5 यूनिट ही ऐड कर रहे हैं किसकी, प्योर घी की। ठीक है, तो हमारा ये नया रेशियो निकल के आ रहा है। अब जो ये वाली 5 यूनिट है, इसका मुझे वेट पता है कितना है, 10 kg है, तो स्टार्टिंग वाली 5 यूनिट का भी वेट सेम ही होगा, है ना, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, Yes, ये sir. पूरी 5 यूनिट उठा के डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए ये भी आ गया 10 kg, जो कि इनिशियल वाला था। Correct, sir. इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बिजनेसमैन अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% and 20% respectively and still makes a profit of 20%. MRP is what percent more than cost price? Okay. If on starting, अगर मैं ले लेता हूँ कि स्टार्टिंग में हमारी MRP है 100 रुपीज। ओके, तो MRP में हमें क्या मिल रहे हैं, दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, एक तो 10% का मिल रहा है और दूसरा 20% का मिल रहा है। 10% के डिस्काउंट के बाद मेरी न्यू MRP क्या हो जाएगी 90 रुपीज, है ना। 20% के डिस्काउंट के बाद मेरी न्यू MRP क्या हो जाएगी 72 रुपीज। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रखा है, इस 72 पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना। 20% का क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे प्रॉफिट ये पता चल गया कि ये 72 रुपीज है, वो मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है, मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान लेता हूँ मेरा एक्स है, तो इससे मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, x प्लस 20% ऑफ x वुड बी इक्वल्स टू 72। सो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 120 ऑफ x बाय 100 इक्वल्स टू 72, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से 60। अब हमें बताने की जो MRP है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अबव लिस्टेड था। ठीक है, कितना अबव लिस्टेड था, उसके लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे MRP और कॉस्ट प्राइस के बीच का, तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में 40। अब हमें ये देखना है कि ये 40 है, वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट। ठीक है, तो 40 कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, 40/60, ये कितने किसके इक्वल हुआ 66, 2/3%। ठीक है, ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the price of sugar rise from ₹6 kg to 7.5 kg per kg. A person to have no increase in expenditure on sugar, okay, will have to reduce his consumption of sugar by। ठीक है, बोल रखा है कि स्टार्टिंग में 1 kg शुगर अवेलेबल थी 6 रुपीज। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके प्राइस में कुछ इंक्रीज हो गया, अब 1 kg शुगर कितने में अवेलेबल है, 7.50 रुपीज में अवेलेबल है। अब क्या कर रहा है, एक पर्सन था स्टार्टिंग में वो 6 रुपीज स्पेंड करता था, अब न्यू में भी क्या है वो 6 रुपीज ही स्पेंड करना चाहता है, तो बताना उसको कंजप्शन में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या था, 6 रुपए की शुगर थी, 6 रुपए ही वो स्पेंड कर रहा था, टोटल कितना यूनिट मिल रहा था उसे, 1 यूनिट मिल रहा था। बट अब क्या है, शुगर का प्राइस क्या हो गया है 7.50 रुपीज, और वो कितने स्पेंड कर रहा है, 6 रुपीज स्पेंड कर रहा है, तो उसे अब कितना अमाउंट मिलेगा 6/7.5, और वी कैन से 60/75, ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो उसके अमाउंट में टोटल रिडक्शन कितने का हुआ है, 1 माइनस 60/75, है ना, कितना होता है ये 3 से कट सकते हैं ना, 15 बाय, हाँ 15/75 और 1/15, 1/5, हाँ 15/75 तो डिफरेंस से आया, अब इनको कट करेंगे तो क्या आएगा 1/5, तो 1/5 अपना क्या होता है परसेंटेज में 20%, तो कंजप्शन में कितना डिक्रीज किया उसने 20% का। Okay, so the next question is, a man spent 35% of his income on food, 25% of 25% on children's education, and 80% of the remaining on house rent. So here he is spending 35% on food, 25% on education, and the remaining. Okay, so now मैन क्या कर रहा है, टोटल अपनी इनकम का कितना परसेंट स्पेंड कर रहा है फूड और इनकम में मिला के, 35 और 25 का एडिशन।
वो क्या है 60%। तो 60% किसमें स्पेंड कर रहा है वो, फूड प्लस एजुकेशन। ठीक है, बचा कितना अब लास्ट में 40%। अब इस 40% का 80% वो किसमें स्पेंड कर रहा है, रेंट में स्पेंड कर रहा है। ठीक है, बोल क्या व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम हिज लेफ्ट। अब कितना बच जाएगा उसके पास, 40% का 80% रेंट में स्पेंड किया, कितना स्पेंड किया रेंट में 32%। बचा कितना अब उसके पास, 40 माइनस 32 दैट इज इक्वल्स टू 8%। लास्ट में कितना बच रहा है उसके पास, 8%। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the single discount equivalent to successive discount of 20% and x% is 24%, then the value is। अगर मैं स्टार्टिंग में मान लेता हूँ हमारा कोई भी एक प्रोडक्ट पी है, उसका एमआरपी है 100 रुपीज। ठीक है, अब इस पे एक सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 24% का, तो हमारा एमआरपी रिड्यूस होकर कितने पे आ जा रहा है, 76 रुपीज पे आ जा रहा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये सिंगल डिस्काउंट 24% का है, वो किन दो सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्वल होगा। अब उसमें से भी एक सक्सेसिव डिस्काउंट की तो वैल्यू हमें दे रखी है। पहला सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है हमारा, 100 रुपीज पे पहला सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद हमारा अमाउंट कितने पे रिड्यूस हो जाएगा, 80 रुपीज पे। ठीक है, अब हमें देखो कितने का रिडक्शन और चाहिए इसमें, टोटल 4 रुपीज का रिडक्शन और चाहिए ना 76 लाने के लिए। ये 4 रुपीज इज 80 का कितना परसेंट है, 4/80 इंटू 100। ठीक है, ये कितना आ गया, 1/20। 1/20 अपना कितना होता है, 5%। तो x की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, 5%। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। हाँ हाँ, देखो इसमें क्या करना है, मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, मैंने प्रोडक्ट पी खरीदना है मुझे, उसका एमआरपी क्या है, 100 रुपीज है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सिंगल डिस्काउंट 24% का एक सिंगल डिस्काउंट किन दो सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्वल होगा, उसमें से एक डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है 20% और दूसरा की x% वाली वैल्यू निकालनी। जैसे बोला जाता है ना कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% इज इक्वल्स टू अ सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट। तो बस इसने उल्टा पूछ लिया है यहाँ पे कि उसने ये वाली वैल्यू दे दी है, ये वाली एक वैल्यू दे दी है और ये निकालने के लिए बोल दिया है कि निकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A spends 65% of his salary and B spends 85% of his salary. If the savings are now equal, what is the ratio of their respective salary? तो A क्या कर रहा है, 65% तो क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर है उसका, सेविंग कितनी है उसकी 35%। ठीक है, B के केस में क्या है, 85% उसका एक्सपेंडिचर है, सेविंग कितनी है 15%, है ना। और हमें क्या बोल रखा है कि ये सेविंग 35% और 15% क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर मैं ए की सैलरी को ए ही मान लेता हूँ तो ए का 35%, बी की सैलरी को बी मान लेता हूँ तो बी का 15% क्या है, इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, A/B इज इक्वल टू 15/35 और 3/7। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, of the 5,000 inhabitants of a town, 40% are male of them 15% are literate. If of all the inhabitants 20% are literate, then what percent of the female of the town are literate? तो क्या बोल रखा है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 5,000 है किसी भी एक उसकी, तो 40% तो क्या है, मेल्स है, 40% मेल है, तो मेल कितने हो गए 2,000, बाकी 3,000 कौन बची, फीमेल बची। ठीक है, अब बोल रखा है इन 2,000 में से भी 15% कौन है, लिटरेट है। तो मेल्स टोटल लिटरेट कितने मिले, 15% ऑफ 2,000 कितना होता है, 2,000 2,000 है ना टोटल मेल, 300। 300, तो कितना 300 कौन है अपने, लिटरेट मेल है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, ऑल द इनहेबिटेंट्स, अब बोल रखा है कि टोटल 5,000 में से, टोटल पॉपुलेशन 5,000 का 20% कौन है, लिटरेट वाले। तो कितने लिटरेट मिले यहाँ से, 1,000 लिटरेट मिले। तो अगर 300 मेल है, फीमेल कितनी होंगी, 700 फीमेल्स होंगी जो कि लिटरेट होंगी। ठीक है, अब हमें बताना है देन व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट, कि कितना परसेंट क्या है, लिटरेट है। तो कितना, 700/3000 इंटू 100।
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 23.3। इसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes were 7500, the number of valid votes that the other candidate got was. ठीक है, बोल रखा है एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट बोल देते हैं ए और बी हैं, बोल रखा है वन गोट 55% ऑफ द टोटल वोट, तो एक को 55% वोट मिले टोटल का वैलिड वोट्स का। ठीक है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45% मिले होंगे। अब आगे क्या बोल रखा है, 25% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, तो जो टोटल वोट्स थे उसमें क्या थे, 20% कौन से थे, इनवैलिड वाले थे। तो जो टोटल वैलिड वोट बचे वो कितने थे, 80% थे। इन्हीं 80% में से 55% ए को मिला है और 45% बी को मिला है, 45% बी को मिला है और 55% ए को मिला है। ठीक है, बोल रखा है द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7500, तो टोटल 100% की वैल्यू थी 7500। ठीक है, हमें बताना है द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट वोट वाज, तो ये 45 वाले का बताना है कि इसको टोटल कितना मिला हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 7500 का 80%, कितना होगा 80% इसका, 750 इंटू 80 करो, 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6000, है ना। क्या, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल पॉपुलेशन पता है हमें कितनी है 7500, अब उसका 80% निकालना है। 80% के लिए क्या करोगे, 750 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना। अब इसमें मुझे पता है कि 750 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, 1500 मिलेगा, इसलिए मैंने जब भी तो बोला कि 1500 को डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई करो 4 से। ठीक है, तो कितना हो गया उस केस में, 1500 को 4 से किया तो 6000। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 6000, जो कि हमारे क्या थे, वैलिड वोट्स थे। ठीक है, अब इसमें से बताने की 45% कितना होगा, 6000 का, क्या 1500, हाँ हाँ माइनस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, माइनस करके निकालो, चाहे 80% निकाल लो, बात सेम ही है, कुछ अलग वो नहीं। ठीक है, तो बस 45% निकाल दो, 6000 का कितना होता है, वही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये होगा 45 इंटू 60, दैट वुड बी इक्वल्स टू 45 इंटू 60 कितना होता है, 2700। तो यहाँ पे कितने मिले होंगे उसको, 2700। कितने क्वेश्चन बच गए, 3 क्वेश्चन बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचिका वेंट टू अ मार्केट टू बाय थिंग्स फॉर ₹5000। तो रुचिका मार्केट जाती है, उसके पास है कितना सामान खरीदना, उसे 5000 रुपए का सामान खरीदना। ठीक है, सम ऑफ हर परचेजेस आर टैक्सेबल एंड सम आर नॉन टैक्सेबल। तो इसमें क्या है, वो दो टाइप के प्रोडक्ट खरीदती है, एक तो टैक्सेबल वाले होते हैं, एक नॉन टैक्सेबल वाले। ठीक है, ऑफ द टैक्सेबल परचेज सी पेज ₹30 एज अ टैक्स। सो टैक्सेबल वाले में क्या है, वो टैक्स कितना दे रही है, ₹30 का, एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 12%। वो टैक्स का रेट कितना है, 12%। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया है कि 12% की वैल्यू क्या है, ₹30। हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, जो कि हमारा क्या होगा, टैक्सेबल वाला अमाउंट होगा। तो हमारा 100% कितना होगा, यहाँ से 30 इंटू 100/12 कितना होता है, ये होता है 250। तो 250 तो क्या है हमारा, टैक्सेबल वाला जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस है। अब इसमें टैक्स जोड़ने के बाद टोटल प्राइस कितना बनेगा उसका, 250 प्लस 30, दैट इज इक्वल्स टू 280 रुपीज। ठीक है, तो 5000 में 280 का तो उसने क्या खरीदा, टैक्स वाला सामान खरीदा। टैक्स फ्री आइटम कितना होगा, 5000 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 280 रुपीज, तो हमारा वो नॉन टैक्सेबल वाला निकल जाएगा। तो ये कितना होगा, 4720। ठीक है, 250 के बाद हमने क्या किया, टैक्स को ऐड किया। ठीक है, वो 250 तो क्या है, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस आ गया।
बट उसमें टैक्स भी जोड़ना है हमें 12% का। तो टैक्स जोड़ने के बाद टोटल अमाउंट कितना पे किया होगा उसने उसके लिए, तो टोटल कितना पे किया, 280 उसने पे किया। अब हमें बताना है कि नॉन टैक्सेबल कितने का खरीदा था। तो नॉन टैक्सेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, 5000 में से 280 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नॉन टैक्सेबल वाला आ जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, while purchasing one item cost rupees 400, I had to pay the sales tax of sales tax of 7% and on another costing rupees 6400, the sales tax was 9%. What percent of the sales tax I had to pay taking the two items together on an average? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 400 रुपए का जब मैं कोई सामान खरीदता हूँ मुझे सेल्स टैक्स कितना पे करना पड़ता है, 7%। दूसरा बोल रखा है जब मैं 6400 का कोई सामान खरीदता हूँ मुझे सेल्स टैक्स कितना पे करना पड़ता है, 9%। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का सेल्स टैक्स मिला के निकालना चाहूँ तो वो कितना होगा, बस ये। ठीक है, तो फर्स्ट में सेल्स टैक्स हमें कितना देना पड़ रहा है, 28 रुपीज। सेकंड में हमें सेल्स टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 64 इंटू 9 कितना होता है, 576, है ना। तो टोटल हमारा सेल्स टैक्स कितना हो गया यहाँ पे, 28 प्लस 576, ये ऐड करो इनको, कितना होता है 604। तो 604 रुपीज तो हमारे क्या है जो कि हमें आए हैं सेल्स टैक्स से, और जो हमारा टोटल अमाउंट है दोनों प्रोडक्ट्स का वो मिला के कितना है 6800। अब हमें बताना है कि 604 कितना परसेंट है 6800 का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एंट्री फी इन एन एग्जीबिशन वाज ₹1 later he was reduced by 25% on, okay ठीक है, स्टार्टिंग में किसी भी एग्जीबिशन की एंट्री फीस कितनी थी, 1। ठीक है, अब वो क्या हुआ है 25% से क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है एंट्री फी। ठीक है, तो रिड्यूस होने के बाद एंट्री फी कितनी हो गई है, 0.75 रुपीज। ठीक है, वो रखा है which okay later this was reduced by 25% which increased the sales by 20%। देखो ये रिड्यूस होने की वजह से ना सेल्स इंक्रीज हो गई है कितनी, 20% की अपनी सेल्स इंक्रीज हो गई है। अगर मैं बोलता हूँ कि जब स्टार्टिंग में 1 रुपए थी किसी भी एग्जीबिशन की एंट्री फीस, तो हमारी टोटल सेल होते हैं तो मान लो, तो टोटल विजिटर होते हैं या फिर टोटल सेल मान लो कि टोटल सेल हो रही थी 100 की, टोटल सेल हो रही थी। ठीक है, तो हम कितने बेच रहे थे, 100 रुपीज का सामान बेच रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमारा 20% इंक्रीज हो जा रही है सेल्स। तो अब कितनी सेल हो रही है हमारी, 120 प्रोडक्ट की सेल हो रही है। ठीक है, अब इन 120 प्रोडक्ट पे, ठीक है, हाँ सॉरी 120 रुपीज की सेल हो रही है। स्टार्टिंग में 100 रुपीज की सेल हो रही थी, अब कितना 20% इंक्रीज हो रही है तो 120 रुपीज की सेल हो रही है। अब हमें क्या बताना है कि द परसेंटेज इंक्रीज द नंबर ऑफ विजिटर, तो नंबर ऑफ विजिटर में कितना इंक्रीज हुआ। स्टार्टिंग में जब 100 की सेल थी तो विजिटर कितने थे, 100 विजिटर थे। अब विजिटर हमारे कितने होंगे, 120 बाई 0.75, 0.75 टोटल सेल हो रही है ना उनसे सभी से। दो पीपल आएंगे तो 1.50 की सेल होगी, ऐसे सेल करते करते टोटल 120 रुपए की सेल हुई है। तो टोटल विजिटर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी हमारी सेल है उसको जो भी एक टिकट का प्राइस है उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल विजिटर निकल आएंगे ना। तो बस इसको डिवाइड करो, टोटल विजिटर आ गए। तो ये कितना हो गया, करो सॉल्यूशन। So are we assuming that there's 100 sales? I mean, like sales of 100. हाँ यार, स्टार्टिंग में हम एज्यूम कर रहे हैं सेल्स ऑफ 100 हो रही है, 100 की सेल हो रही है हमारी। Okay, sir. ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कितना से कितना सेल हो रहा है, टोटल विजिटर कितने हैं 160। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो स्टार्टिंग में था 100, अब कितना हो गया है 160, इंक्रीज कितने का हुआ है 60 का। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा 60। ठीक है, डिस्कशन खत्म। अभी थोड़ा सा स्कोर देख लेते हैं किसको कितना मिला है। उससे पहले मैं लाइव
बंद कर दो।